हम्म अच्छा 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 जापर ऑनलाइन कोई अच्छा लाइव ओके जी देखिए गुड मॉर्निंग some events which have actually changed the course of current affairs this particular year. One of them is the Super El Nino. Super El Nino, which we will understand in due course of time, is actually an event which will have a long standing impact on your economy, on your society, on everything. So when we understand what is Super El Nino, we have to understand multiple aspects of the world geography in order to understand this particular concept. Now, when we talk of El Nino, when the discussions arise that what is El Nino, because many people did not know what El Nino was. When we started studying about monsoons, when we started studying about what? The failure of monsoons. See, there are a lot of theories pertaining to monsoons. The first was the Halley's concept with regards to the thermal differentiation of land and water. The second, we learnt about Flohn's ITCZ concept, which talked about the ITCZ movement, which is responsible for the reversal of the direction of winds. The third one was a concept called Monex, which talked about branching and the magnitude. But one particular concept which was not understood by multiple scientists till very late was the failure of monsoons. Failure of monsoons was not well understood by the scientists till very late. So in order to, and they have still not understood properly. If I say that we have understood the El Nino concept entirely or in its entirety, I would be wrong. There are multiple aspects of El Nino which we have not understood till date. ठीक है, तो एल नीनो पे जब हम फोकस करते हैं, जब हम पढ़ते हैं, we will understand multiple aspects of what exactly is happening. ठीक है, so this El Nino explains the failure of monsoons. Why on certain occasions you have normal monsoons, why on certain occasions you have monsoons which are far less than your expectations. So when a particular year shows these symptoms of less precipitation as regards to your normal rainfall, your normal average precipitation per se, that particular year we say there is El Nino. But why it is happening, and there is a concept of Super El Nino coming in of late. So we have to understand it because it is important from the perspective of your UPSC mains. In fact, your OPSC mains also, these questions can be asked because these are directly impacting the lives in this particular year. This is a direct current affairs topic which has to be understood. Chalo, theek hai, let's move forward.
What is El Nino? Before understanding El Nino, we have to understand what the normal condition is all about. Okay, so please focus on the board. This is Africa for you. This is Asia. This is Australia. This is South America. Let us take this into consideration, that when we consider El Nino, it is not a singular event happening with one part of the world. In fact, it has its direct impact on lot of the continents. बहुत सारे continents में इनका effect पड़ता है. Now let us take this into consideration. Let us focus. What happens in the normal condition is that, you know, that there are trade winds which converge at the ITCZ level or the thermal equator level. So these trade winds, they are powerful. The first important concept that needs to be understood, the trade winds are powerful. When they are powerful, what they do is they displace the surface water from near South America towards Australia. I repeat again, when the trade winds are powerful, they displace the surface water, the warm surface water from the coast of South America towards the coast of Australia. तो यहाँ पे क्या जमा हो गया है? Here you have warm surface water. Getting the point? So this warm surface water, it gets displaced from the coast of South America towards the coast of Australia and it accumulates here. यहाँ पे accumulation होता है. जब यहाँ पे accumulation होता है, गर्म पानी है, it will start evaporating. Okay, it will start evaporating. So it will start evaporating. If it evaporates, it will condense. When it evaporates, it will condense. When it condenses, there will be precipitation. So under normal circumstances, there is precipitation on the coast of Australia, eastern coast of Australia. There is displacement of water from the surface near South America towards Australia. ठीक है, तो यहां पर जब आपके लिए surface water displace हुआ है, what will happen? Have a look. This is Australia. This is South America. मैंने आपसे बोला कि surface water displace हो के यहां तक आ गया. जब surface water displace हो जाता है, what happens is the water from below, it starts moving upwards. We call it upwelling. When the top water is removed, it is displaced. What happens is there is water coming from the bottom. That particular concept is known as upwelling. So whenever in the normal circumstances there is displacement of water from the coast of South America towards the coast of Australia, there is upwelling. Okay, so the warm water is displaced and there is replacement by water from below. Not only is the water coming from below, but also what happens is it brings in minerals from below. So when it brings minerals from below, there is what? Fishing. The fishes move behind the minerals. They also move towards the surface. And when they move towards the surface, that is the time when the fishing industries
makes maximum benefit out of the upwelling. It gives them a lot of profit. They earn millions by fishing during circumstances. So I repeat the normal circumstance again, the normal period again. There is displacement of water from the coast of South America towards the coast of Australia. When the water is displaced towards Australia, it condenses, it precipitates. तो यहां पे एक छोटा लो प्रेशर बनता है, यहां पे कंडेंसेशन होता है, यहां पे प्रेसिपिटेशन होता है. और साउथ अमेरिका में क्या होता है? Once the water moves towards the surface water moves towards Australia, there is a vacuum which is created, there is a void which is created, and to fill that void there is water coming from the bottom, that we call as upwelling. So upwelling jab hota hai, what happens is there is coming up of minerals, and with those minerals there are fishes also coming with the minerals, and that is a boon for the fishing industry. Okay, everyone understood the normal concept. Now let us get back to what happens. What is the change which happens during the El Nino? So in El Nino, this particular situation changes. There is a change in this particular scenario. What happens? Let us see. अब क्या हुआ है? पानी यहां आ गया है, गर्म पानी. गर्म पानी तो यहां पे है, गर्म पानी यहां पे है, तो यहां पे कंडेंसेशन होके प्रेसिपिटेशन भी हुआ है. प्रेसिपिटेशन जब हुआ है तो यहां पे there is a possibility that the height of the water will be higher than what you have here, because there is no precipitation here, it's continuous precipitation here. तो यहाँ पे height of the water surface it increases. This is the first. Second, एक दो साल बाद जब ये चीजें हो जाती हैं तब ट्रेड विंड्स they are not powerful enough. They cannot displace the water from near the coast of South America towards Australia. They cannot do it anymore. उस टाइम में पावरफुल थे, नॉर्मल कंडीशन में they used to displace the water, but now after 1 or 2 years they are not powerful enough, so they are unable to displace the water from South America towards Australia. Trade winds have weakened. So when we talk of El Nino, the first condition is El Nino में trade winds have weakened. Second, lack of displacement of water. There is lack of displacement of water. जो पहले यहां से यहां डिस्प्लेस हो जाता था, अभी डिस्प्लेस नहीं हो पा रहा है. When it is not getting displaced, what happened? यहां पे वो पानी रह गया है, यहां पे हाइट बढ़ गया है. So what happens is this water slowly starts moving towards South America. When it slowly starts moving towards South America, this entire zone becomes a huge zone of low pressure. This entire zone
ब्लैक कलर ओके दिसुनी कि ऑनलाइन छुआ देखी पान ओके ओके ठीक है ठीक सो व्हाट आई वाज सेइंग इज ड्यू टू द inability of the trade winds to displace the water towards Australia, there is a reverse movement from Australia towards South America. So this entire zone becomes a large zone of low pressure. It becomes a large zone of low pressure. When it becomes a large zone of low pressure, there will be precipitation in all this part. So Peru, which otherwise was not receiving much of a rainfall, in El Nino it receives lot of rainfall. There is catastrophic floods in Peru. There is catastrophic flood. जब catastrophic flood हो जाता है यहाँ पे तो it is detrimental for the people of पेरू. सो एल नीनो में क्या हुआ ट्रेड विंड्स पानी लेके नहीं आ पा रहे हैं पानी डिस्प्लेस नहीं कर पा रहे हैं जिस वजह से देयर इज अ काउंटर मूवमेंट टुवर्ड्स द साउथ अमेरिकन कोस्ट दिस एंटायर जोन बिकम्स अ लो प्रेशर एंड देयर इज precipitation on the coast of South America which otherwise would have never received so much of precipitation. ये हो गया एक पार्ट. Now what will happen? Let's go to the next slide where you will understand the entire concept. How do we change the color? Now, this entire zone is a low pressure. And you must have read in your geography lessons, in your monsoonal mechanism classes, that during the period of monsoon, this particular area is the ITCZ. This is the ITCZ, which is the low pressure. And this area is a high pressure zone, which is known as the mascarene high. What happens is, there is one high pressure and there are two low pressures. High pressure एक है, low pressure दो है. इसका magnitude is higher than that of the Indian low. Indian low pressure से ये पैसिफिक लो प्रेशर का मैग्नीट्यूड ज्यादा है. इट इज एट अ हायर मैग्नीट्यूड. इसका पावर ज्यादा है. तो जो विंड्स विच वुड आइडियली गॉन टुवर्ड्स इंडिया एज साउथ वेस्ट मॉनसून्स, some of it will get diverged towards Pacific Ocean. So let's say in a crude example, India would have received 100, but due to the presence of the low pressure at Pacific Ocean, you will only get 40, 60 will go that side. So this results in the reduction in the magnitude of the precipitation in India. So I repeat what I told in El Nino. This is the El Nino. What happens in El Nino is that the trade winds have become weaker. They are unable to displace the surface water towards Australia. Rather, there is a counter movement from Australia towards South America. Due to the counter movement towards South America, what happens is
there is the creation of a huge low pressure zone in the Pacific Ocean. This huge low pressure zone is responsible for catastrophic floods in the western part of South America, which ideally would have never received so much of rainfall. Now, when we take the monsoonal process into consideration, monsoonal winds which come from the Mascarene High towards India and are responsible for precipitation, what they witness is there are two low pressures. One is in India, the other is in Pacific Ocean. So, most of the wind get diverged, deflected towards the Pacific Ocean. Due to the deflection towards the Pacific Ocean, there is a reduction in the magnitude of what? Precipitation, the monsoonal mechanism. So there is a failure of monsoon. ये है एल नीनो, यह है एल नीनो. See, this is the El Nino process, but we are talking of a term called Super El Nino. We talked of El Nino, but now we have to consider Super El Nino. I told you that the water gets, there is a counter movement from Australia towards South America. When there is a counter movement of water from Australia towards South America, there is a possibility of 0.5 degrees to 1 degree rise in the temperature of the water on the coast of साउथ अमेरिका. इतना ही होता है. ये गर्म पानी जब यहां से यहां आ जाता 0.5 डिग्रीज या 1 डिग्री तक मैक्स टू मैक्स उसका टेम्परेचर बढ़ता है नॉर्मल एल नीनो में. उसी में ही हमारा इतना हालत खराब हो जाता है, हमारी बारिश इतनी कम हो जाती है. बट दिस ईयर व्हाट हैज हैपेंड इज द टेम्परेचर हैज रिजन टू एटलीस्ट आई थिंक 2 डिग्रीज और 2.5 डिग्रीज. इतना बढ़ गया है वहां पर उनका टेम्परेचर. द वाटर एट दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड हैज रिजन अराउंड 2 डिग्रीज टू 2.5 डिग्रीज. तो दिस लो प्रेशर मैग्नीट्यूड हैज फर्दर इंटेंसिफाइड. बहुत ही स्ट्रॉन्ग लो प्रेशर है, जिस वजह से जहां आप 40 भी रिसीव कर रहे थे इस बार शायद 10 रिसीव करेंगे, बाकी सब 90 उस तरफ चले जाएगा. बिकॉज द लो प्रेशर दिस टाइम अराउंड which is created is very intense because of higher temperature of the sea surface temperature near the what? Near the coast of South America. जो 1 डिग्री या 0.5 डिग्री बढ़ने वाला था जिसका एवरेज टेम्परेचर, वो 2 डिग्री बढ़ गया है. और 2 डिग्री जब बढ़ गया है तो वहां पे जो लो प्रेशर सिस्टम क्रिएट होगा वो बहुत ही इंटेंस लो प्रेशर सिस्टम क्रिएट होगा. और बहुत ही इंटेंस लो प्रेशर क्रिएट सिस्टम होगा तो जितना विंड्स आपके पास जा रहे थे उतना भी नहीं आएगा, मैक्स टू मैक्स उस तरफ चले जाएगा. तो आपका मॉनसूनल मैकेनिज्म इस साल बहुत ही खराब हालत में है, बहुत ही खराब हालत में, बहुत खराब. तो इतने खराब रहिला धर, देन व्हाट विल हैपन इज, let us focus on what will happen if there is a failure of monsoon. If there is a failure of monsoon, what will happen? What will happen if there is a failure of monsoon? First, water scarcity. India is a country wherein we have lot of water but no water. Our water, we have, I think we are the 4th country in the world having the highest fresh water in India. But we do not have proper storage mechanism. We have polluted our water. बहुत सारी चीजें हमने की है. जब बारिश ही नहीं होगा, आपके रिजर्वायर्स को स्टोर करने लायक तो कुछ है ही नहीं. जब स्टोर करने लायक कुछ नहीं होगा, ऑल योर सिटीज आर
dependent upon these rainwater. So when your cities are dependent on the rainwater, what exactly will happen when there is no rain? So urban areas, rural areas which are dependent on this rainwater for their potability, they start feeling the heat. बहुत problem hobo. Urban areas especially. Urban areas re water scarcity thorate start hela mane it will be very problematic. ठीक है जी. Second, तमे जानिच कि आमर गोटे सीजन अच्छी एग्रीकल्चर जोटा हम कहू खरीफ, where it is rain dependent agriculture. Rain dependent. खरीफ सीजन starts यही रज टाइम स्टार्ट है. It will extend I think till October November. तो भाई माने गोटे कथा को थर वर्षा हैला नहीं, if there is no rainfall, what will happen to your crop? There is no scope that you will have agricultural production this time around. Agricultural production helani mane just imagine the level of inflation that you are going to have. Inflation kette बढ़ी जीवो कहीं की पानी नहीं तो क्रॉप क्या उगेगा? क्रॉप नहीं उगेगा तो ऑटोमेटिकली दाम बढ़ेगा. It will be a problematic situation for people, especially from the people at the lower levels of the society, people living in the bottom of the pyramid, grass root में जो नीचे रहते हैं उनके लिए ज्यादा प्रॉब्लम हुआ, because inflation inherently affects the people living in the bottom of the pyramid, ज्यादा उनके ऊपर इफेक्ट करता है. तो इमेजिन पॉवर्टी और बढ़ सकता है. यस. थर्ड, industries. Multiple industries are dependent upon water for their sustenance, like steel and iron, like power plants, like textile industry. Yes. तो भाई पानी नहीं होगा तो ये इंडस्ट्रीज फंक्शन कैसे करेंगे? फंक्शन नहीं करेंगे तो प्रोडक्शन कहां से होगा? प्रोडक्शन अगर नहीं हो पाया तो भाई आपकी जीडीपी का तो डामाडोल हो जाएगा. सो यू आर सीइंग इटसेल्फ देयर आर कंडीशंस वेयर इन यू हैव नो कंट्रोल ओवर. सो ज्योग्राफी समटाइम्स प्ले अ क्रूअल जोक ओवर इकोनॉमी. यस, बहुत बार ऐसे होता है कि आपके ज्योग्राफी, यहां पर सी ज्योग्राफी इज प्लेइंग अ क्रूअल जोक ओवर इकोनॉमी. वाटर स्कैर्सिटी, agricultural problems, industrial problems. Who is responsible for this? It is the geography. It is the climatological situation. तो क्लाइमेट, तो यहाँ पे आपके लिए इंडस्ट्रीज के लिए भी बहुत प्रॉब्लम हो सकता है. तो प्रोडक्शन कम हो सकता है, प्रोडक्शन कम हो सकता है, जीडीपी में भी गिरावट देखने को मिल सकता है. देयर मे बी अ फॉल इन द जीडीपी बिकॉज ऑफ दिस. हो ना नहीं? यस और नॉट? और क्या हो सकता है? एनीवन एल्स? एनीबॉडी वांट्स टू से एनीथिंग? If you want, you can please write it down. So what El Nino has done is, El Nino used to happen every 2-3 years, but thanks to the man's greed, thanks to our exploitation of our resources, deforestation, we have seen there is a continuous rise in the sea surface temperature. When there is a continuous rise in the sea surface temperature, you are seeing all these things. So El Nino, which ideally would have happened every 2-3 years, is now happening every alternate year. So when it is happening every alternate year, it is becoming problematic for a country like India, which is dependent on rain for its industries as well as for its agriculture. India is an agro economy, agriculture driven economy. Maximum of the people are dependent on agriculture. Yes. So maximum of the people are dependent on agriculture. What exactly will happen is, this will create lot of problems. And when people have all these sufferings, the governments
what reputation may also take a fall. जब ये सारी चीजें प्रॉब्लम हो जाती है तो गवर्नमेंट अगर इफ दे आर अनेबल टू हैंडल दीज थिंग्स इफेक्टिवली देन देयर विल बी प्रॉब्लम्स. ये है सारी चीजें विथ El Nino. Any doubts if you have with regards to El Nino? If you have anything to ask, you can just write it down. I can explain it again. So what did I say? I'm just repeating the entire El Nino process in 2 minutes so that all of you can understand. Yes. So this is a kind of disaster. This is not people who say that it is not a disaster. This is a kind of disaster only. El Nino is kind of a disaster, though it is slow in nature, but it is a disaster where the effects are felt slowly, but the effects are very strong. So first, I'll just give you a quick recap on what we did. That El Nino is a condition wherein the trade winds are unable to displace the top surface water from South America towards Australia. When they are unable to displace, there is a counter movement of water from Australia towards South America. There is a creation of huge low pressure zone on the coast of South America. When there is a creation of huge low pressure zone on the coast of South America, there is precipitation, heavy precipitation, catastrophic floods on the coast of South America. Yes. So when we take the Indian climatic condition into consideration, we'll see that there is Mascarene high, there is Indian low, and there is Pacific low. So the winds which ideally would have moved from Mascarene high towards Indian low gets diverted towards Pacific low. So whatever the magnitude of winds you would have received under the monsoonal framework, now you will not receive or even half of it due to the Pacific low. Now this is the El Nino. Under the super El Nino scheme, the average temperature which ideally would have increased by 0.5 to 1 degree have risen to 2.5 degrees. So the low pressure created on the Pacific Ocean on the coast of South America is very intense, very strong. So it will divert maximum of the winds from Mascarene high towards itself, resulting in a catastrophic condition in India with very, very less precipitation. So a few days back, I was reading in the newspaper that we are having almost 64% deficit in precipitation. Now it has reduced to 48%. But 48% precipitation reduction is something which is dangerous for a country like India, which is dependent on rain for its economy, especially agriculture and certain portion of its industries which need water. तो आपका GDP भी गिर सकता है, आपका agricultural productivity, agricultural production भी गिर सकता है, and it can lead to widespread unemployment, widespread poverty across India during this fiscal year. I hope everybody understood this concept. And if at all a question comes in your mains examination, you will be able to write. If at all such concepts come in your preliminary examination, you are able to write. This is a topic which has been taken from one of your newspapers in this week itself, where they have given about this particular concept. तो आप सब समझ गए होंगे, ये हमारी आशा है, अपेक्षा है, उपेक्षा है. Yes, I hope everybody understood. Great. Now let us go to another concept, another important concept, which is again responsible for multiple aspects of your country. We read about geography now. Now let us read a bit about your polity. पॉलिटी में भी कुछ कुछ चीजें हुई हैं, तो आपसे मैं ये पूछना चाहता हूं, मैं आपसे बोलना चाहता हूं कि कुछ कुछ चीजें हुई हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल ऑफ लेट देयर हैज बीन वन कॉन्सेप्ट व्हिच हैज कम, एंटी डिफेक्शन लॉट. नेक्स्ट
जो कॉन्सेप्ट है एंटी डिफेक्शन वाला, इसमें बहुत सारी चीजें हुई हैं, इसी हफ्ते हुई हैं. यू हैव सीन ऑफ लेट मल्टीपल थिंग्स हैपनिंग. वन वाज दैट राघव चड्डा केस. You are seeing the Trinamool Congress happening now. कुछ साल पहले हमने देखा था एकनाथ शिंदे, we had seen अजित पवार, और उससे कुछ दिन पहले हमने देखा था बीएसपी एंड कांग्रेस इन राजस्थान. BSP and Congress in Rajasthan. Okay, let us first understand what is the motive behind the enactment of such a law of anti-defection. ये डिफेक्शन क्या होता है, डिफेक्शन क्या होता है, तभी हम जानेंगे कि भाई एंटी डिफेक्शन क्या है. इफ वी अंडरस्टैंड डिफेक्शन, देन ओनली विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट एंटी डिफेक्शन इज ऑल अबाउट. सो लेट अस ट्राई टू फोकस. योर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स डिड नॉट इमेजिन that your lawmakers will stoop so low that they can change their parties anytime they want. Yes, so there was a culture which was called as the Aya Ram Gaya Ram culture previously, and the Rajiv Gandhi government in 1985 brought in a constitutional amendment, the 52nd constitutional amendment, wherein they introduced certain stringent measures under the 10th schedule of your Indian constitution, which is called the anti-defection law. For example, मैं अभी एक लॉ मेकर हूं, मेरा इलेक्शन मैंने आज बीजेपी से लड़ा है, मैं जीत गया, जीतने के बाद मुझे मैंडेट मिला है कि भाई बीजेपी के पॉलिसीज को आगे बढ़ाने. आई हैव won the election based on showing BJP's work, BJP's mandate. Now tomorrow I change my party, I go somewhere else. So this is actually a cheating of the mandate given by the people of my constituency. So this particular anti-defection law is applicable to MPs from Lok Sabha and Rajya Sabha, MLAs from your Vidhan Sabhas and Vidhan Parishad, मतलब legislative councils, legislative assemblies and legislative. तो इन्हीं के ऊपर एप्लीकेबल है, इनके ऊपर एप्लीकेबल है ये चीजें. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम जानेंगे कि भाई ये सब चीजें क्यों हुआ है, कैसे हुआ है. ये जो राघव चड्ढा वाला केस हुआ था, तो ये क्यों हुआ था, व्हाट वाज द लॉजिक बिहाइंड. यू कैन राइट डाउन फ्यू थिंग्स. आई वुड request if you write down few things also, that would be very very important from the perspective of your mains examination answer writing, because if you write these terminologies it will be very easy for you. Write down, the 10th schedule was introduced, the 10th schedule was introduced by the Constitutional Amendment Act, 52nd Constitutional Amendment Act. Why? Because जब लोग एक पार्टी से दूसरे पार्टी को शिफ्ट कर रहे थे without even understanding why they have been elected, what will happen? People will start not respecting the democratic process anymore. They will not support the democratic process anymore.
तो आपका डेमोक्रेसी खतरे में आ जाता है भाई। जब आया राम गया राम, मतलब आया, आप किसी को वोट दिए हैं, वो कहीं और चले जाता है, दैट इज बेसिकली अ चीटिंग डन टू द इलेक्टर। जो इलेक्ट कर रहे हैं उसको चीट। मैंने आपको वोट दिया था क्योंकि मैं एक पार्टी के आइडियोलॉजी को फॉलो करता हूं, आपके काम को पसंद करता हूं। कल को अगर आप अपना पार्टी चेंज कर देते हैं, दैट इज चीटिंग। यस, you have lot of cheating laws when somebody is providing you some services, हाँ ना नहीं? भाभी नहीं गोटे टेलीकॉम कंपनी अच्छी कि गोटे प्रोडक्ट कंपनी अच्छी, there are lot of laws which actually deter the companies from cheating its consumers. So when you as a person who is responsible for the democratic principles of India is getting cheated, there has to be some kind of law to protect your interest in the Indian democracy. तो इसीलिए 10th शेड्यूल को एनैक्ट किया गया था कि ये सब चीजें बंद हो। बट आप देखिए, हमारे नेता लोग इस प्रकार से लॉ बनाते हैं जहां पे हमेशा लूप होल होता है, राइट? ऑफ द वोटर्स कास्ट देयर वोट्स नॉट ओनली फॉर द वोटर्स कास्ट देयर वोट not only for an individual but also the ideology of a particular party. So when there is shifting of legislators from one party to another, there is erosion of the faith in the Indian democracy. There is erosion in the faith of Indian democracy. There are two important judgments which were given by the Supreme Court. The first one is the Quijano-Halahan versus Sakilu in 1992. I'll explain the first case second, and the second is S.R. Bommai versus Union of India 1994, and third is Kuldeep Nair versus Union of India 2006. ये आपको ये सब याद रखने हैं कि ये सब में क्या हुआ है, राइट डाउन। एज पर दीज थ्री लैंडमार्क केसेस, the Supreme Court upheld the validity of the 10th schedule, and it has observed that political parties are central. Please remember these terminologies because these are straight away coming from the mouth of the Supreme Court. So you have to quote it
वर्बटिम, इधर उधर की चीजें मत लिखो, ये डायरेक्ट लिखो। यस, political parties are central, political parties are central to the India's democratic framework, and anti-defection laws are important for the protection of this, and anti-defection laws are important for the protection of this. डिस्क्वालीफाई आप कब होते हैं? डिस्क्वालिफिकेशन बहुत सारे ये में होता है। लेट अस फर्स्ट फोकस ऑन वन बाय वन। पहले में होता है आप जब वॉलंटरीली यू गिव अप मेंबरशिप ऑफ अ पार्टी। सेकेंड, you vote contrary to party whip। इसका मतलब यह है, ये सबसे पहला। थर्ड है आपके लिए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के लिए, वो मैं बताऊंगा आपको। फोर्थ है नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स के लिए। इन चारों के लिए क्या क्या प्रावधान है आपके कॉन्स्टिट्यूशन में, वो मैं आपको बताता हूं। वॉलेंटरीली आप मेंबरशिप छोड़ देते हैं। वॉलेंटरीली जब आप एक पार्टी छोड़ देते हैं, यू आर लायबल फॉर डिफेक्शन, दैट यू आर अ डिफेक्टर। सेकेंड, आप क्या करते हैं, पार्टी में आपको बोला गया है कि ये पर्टिकुलर बिल के खिलाफ वोट देना है, पर आप उसके सपोर्ट में वोट देते हैं। That means you are defying the party whip. You are defying the party whip. You are not listening to what the party is saying. अभी एक बिल हुआ है जहां पे आपको उस बिल के समर्थन में वोट देना है, आपने उसके समर्थन में वोट नहीं दिया, आपने उसके विरोध में वोट दिया है, तो ये आपने पूरा कैटेगरिकली अपने पार्टी को डिफाई किया है। यू हैव डिफाइड द विप ऑफ योर पार्टी। व्हेन यू हैव डिफाइड द विप ऑफ योर पार्टी, यू आर लायबल फॉर दिस, दैट यू विल बी डिस्क्वालिफाइड अंडर डिफेक्शन। ठीक है। थर्ड, एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीतता है इलेक्शन, जीतने के बाद वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर जाता है। अगेन दैट इज चीटिंग ऑफ the Indian electorate. That can never happen. You will remain an independent for the end of the term, or if at all you want to join a party, please resign from your seat and then join a party, then fight elections again. Okay? तो ये है कि आप इंडिपेंडेंट है तो आप इंडिपेंडेंट ही रहिए फॉर द फुल टर्म। आप उसके बीच में ये सब ना करिए। अगर आप करते हैं, यू आर लायबल फॉर डिस्क्वालिफिकेशन। ठीक है। उसके बाद है नॉमिनेटेड कैंडिडेट। नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स क्या है कि 6 महीने के अंदर, 6 मंथ्स के अंदर अगर आप, मतलब आप चुने जाने के 6 महीने के अंदर, इफ एट ऑल यू आर व्हाट ज्वाइनिंग अ पॉलिटिकल पार्टी, इट इज फेयर इनफ। आफ्टर 6 months, if at all you are doing it, you are liable for defection. Okay? अगर आप एक नॉमिनेटेड मेंबर है, आप 6 महीने के अंदर ही पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, बट 6 महीने के बियॉन्ड अगर आप ये चीज करते हैं, यू आर लायबल फॉर डिफेक्शन। तो ये सारे प्रावधान आपका संविधान आपको देता है एंटी डिफेक्शन के माध्यम से, कि भाई कौन रह सकता है, कौन नहीं रह सकता है, हु कैन बी केप्ट, हु कैन बी डिस्क्वालिफाइड। बट देयर आर लॉट ऑफ कैचेस। ये तो है बस संवैधानिक प्रावधान है, इसके बारे में तो हम बात ही किए हैं, किंतु यार मेन जिनसे कि हाउ
political parties are misutilizing the constitutional mandate so that it can be benefiting them. Every political party is trying to benefit from the loopholes present in every bill, every act. जहां पे लूपहोल्स रहता है उनको पता रहता है और वो उसी लूपहोल का फायदा उठा के अपने फायदे का काम कर लेते हैं. ओके, तो सुप्रीम कोर्ट गोटे जिनस कहला, सुप्रीम कोर्ट कहला कि तुम्हें जो कथाटा कहल कि वॉलंटरीली यू गिव अप द मेंबरशिप. व्हाट डज दैट मीन? व्हाट डज वॉलंटरीली गिविंग अप the what do you call that membership means? कि आपको रिजाइन करने की जरूरत नहीं है, आपको रिजाइन करने की जरूरत नहीं है. अगर आप अपना काम आपके पार्टी के विपरीत करते हैं, पार्टी गोटे जिनस कहला तुम्हें तार ऑपोजिट काम कर, ऑटोमेटिकली इट विल बी कंसिडर्ड एज व्हाट? इट विल बी कंसिडर्ड एज giving up your membership. बुझी पार लो? I am saying that the court has held that आपको voluntarily membership देने के लिए आपको लिखने की जरूरत नहीं है resignation. For example, you are doing your activities in a manner such that your work is contradictory to the party's principles, then automatically it will be considered as voluntarily giving up your membership. Okay, तो ये सारी चीजें हो रही हैं. जब ये सारी चीजें हो रही है तो आपको कंसिडर किया जाएगा as you have done something which is liable for what? Disqualification. सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहां पे? ये सब है आपके सेकंड पैराग्राफ ऑफ द एंटी डिफेक्शन लॉ, 10th शेड्यूल के सेकंड पैराग्राफ में है. बट थर्ड पैराग्राफ और फोर्थ पैराग्राफ बहुत सारी चीजें कहती हैं जो कि एक्चुअल में फायदा उठा रहे हैं उसका पॉलिटिकल. थर्ड पैराग्राफ सेज, the third paragraph says if one third of members they split, one third of the members they split. आपके पास 12 थे, 12 में से 1/3 4 निकल के अपना एक स्प्लिंटर ग्रुप बना दिए. They will not be counted as somebody who have defected. But ये बहुत छोटा नंबर है. 1/3 is a very small number. When 1/3 is a very small number, what happens is आराम से छोटे छोटे ग्रुप्स निकल जाएंगे और स्लोली आपका पार्टी भी टूट जाएगा. तो इसीलिए 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में क्या हुआ? 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ये हुआ कि ये वाला प्रावधान को ही डिलीट कर दिया गया. They have deleted this. There is no more concept of 1/3 members splitting the party and forming a splinter group, because inherently every party will have कल को थोड़ा थोड़ा करके निकल के जाके पार्टी पूरा टूट जाएगा. This is again against the ethos of the democracy. So that is why under the 91st Constitutional Amendment Act it was removed. It was totally removed. इसको हटा दिया गया. बट आपका जब हम डिफेक्शन की बात करते हैं दो चीजें आते हैं. पहला है स्प्लिट जो कि यह है, दूसरा है मर्जर. दो चीजें आती हैं. हमने अभी जो जितने नेताओं के बारे में आपसे पढ़ा, राघव चड्ढा के बारे में हो जाए, एकनाथ शिंदे के बारे में हो जाए, अजित पवार के बारे में हो जाए, वो बीएसपी वाला हो जाए, दे आर नॉट एसोसिएटेड विथ this particular thing, third para, nahi, they are associated with merger. Merger is present in the 4th paragraph. Merger, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है. वो बोलते हैं they have defined two things, original party and legislative party.
Original party and legislative party, they have defined two particular terminologies. One is the original party, the other is the legislative. The original party means your office bearers and the one who manage your party, the leaders. Legislative party उसी बीच, let's say there is a party तृणमूल कांग्रेस, और ऑफिस बियरर्स में आपके लिए ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी, कल्याण बनर्जी, महुआ मोइत्रा, ये सब आ गए. लेट्स, आई एम जस्ट गिविंग एन हाइपोथेटिकल एग्जांपल. लेजिस्लेटिव पार्टी में उनके लिए आ गए लेट्स से 29 एमपी प्लस 80 एमएलए. यह है लेजिस्लेटिव. तो डिवाइड कर दिया है उन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज को एज ओरिजिनल पार्टी एंड लेजिस्लेटिव पार्टी. एक ही पार्टी को दो हिस्सों में उन्होंने बांट दिया है. ओरिजिनल पार्टी वो है जो आपका मैनेज करते हैं, जो डिसीजंस लेते हैं, जो ये सब करता है, वो है ओरिजिनल पार्टी. और बाकी उसी का ही एक हिस्सा है लेजिस्लेटिव पार्टी, जो आपको रिप्रेजेंट करते हैं, आपके पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं. कहां पे? आपके लेजिस्लेटिव असेंबली पे, आपके क्या बोलते हैं उसको, लोकसभा में. गोटे मिनट पिलामने. ओके, तो जो आपको रिप्रेजेंट करते हैं कहां पे, आपका लेजिस्लेटिव असेंबली में, आपके लोकसभा में, राज्यसभा में, जो लोग आपको रिप्रेजेंट करते हैं वो आपके लिए लेजिस्लेटिव पार्टी का हिस्सा हो गया. तो उन्होंने उस पे कहा है, द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट इफ 2/3 of the members join another party, how much? 2/3 of the members join another party, they will not be accepted under the disqualification. Plus उन्होंने ये भी कहा है कि अगर ओरिजिनल पार्टी merges with another party, it will not be considered under what? Defection. तो सुप्रीम कोर्ट रे या विषय किसी भी जजमेंट सेमिति आसी नहीं. We have not had much of a judgment with regards to the merger. So you can write down that the political party or the original party versus the legislative party debate has not been fully understood by the Indian judicial system, where Supreme Court has multiple times देखो, ओरिजिनल पार्टी राजी नहीं हुआ. अभी तृणमूल कांग्रेस राजी नहीं है, ममता बनर्जी इज नॉट एक्सेप्टिंग, बट उनके एमपीज बोल रहे हैं कि हम अलग पार्टी में ज्वाइन कर जाए. वेदर इट इज वैलिड? अभी अरविंद केजरीवाल राजी नहीं है, बट राघव चड्डा एंड 6 others, they are joining the BJP. Is it constitutionally valid? ये है क्वेश्चन. इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक कुछ नहीं कहा है. बट द बिग मैंडेट, द बिग क्वेश्चन हियर इज, द सुप्रीम कोर्ट सेज दैट ओरिजिनल पार्टी अगर राजी नहीं है तो लेजिस्लेटिव पार्टी ये सब नहीं कर सकती है. बट इंडिया में अभी जितने मर्जर्स हुए हैं, जितने भी मर्जर्स हुए हैं, व्हाट दे हैव डन इज, यहां पे देखिए, तृणमूल कांग्रेस के 20 एमपीज दे जॉइंड विद अ
party called the National Citizens Party of India, NCPI. 29 MPs थे, 20 ज्वाइन करके, तो मोर देन 2/3 they have joined another party. But did they have concurrence with the original party, Mamata Banerjee? Absolutely not. So it can be fought in the court. It can. So it can be fought in the court. It can be fought in the court कि आप यहां पे आपके ओरिजिनल पार्टी के सपोर्ट में आप आके यहां पे दूसरे के साथ मर्ज किए हैं, या ओरिजिनल पार्टी के साथ तोड़ के आप यहां पे आए हैं, ठीक है ना. दैट इज वाई द केसेस विच आर पेंडिंग विद द कोर्ट इज, अभी देखिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं. देयर वाज उद्धव ठाकरे एंड एकनाथ शिंदे. Eknath Shinde took maximum of the MLAs, but ये ओरिजिनल पार्टी है, ये लेजिस्लेटिव. When they went and they joined the NDA, what the court told is, the court gave them the original party status. So now they carry the symbols of what? They carry the symbol of the Shiv Sena. They don't carry. इनके पास numbers नहीं, so they don't carry. Second, Ajit Pawar broke away from NCP, मैक्सिमम लोगों को लेके. तो इनका भी केस में यही हुआ. They were given the symbol. Why? Because the court believed that maximum of the legislators, maximum of the representatives have left for another group. तो इनको सिंबल मिलना चाहिए. तो ये जो 2/3 वाला कॉन्सेप्ट है, यहीं पे यूज करके इन लोगों ने पार्टी को, अपने पार्टी को ही ओरिजिनल पार्टी बना दिया है. सो दे हैव नॉट मेड एनी डिस्टिंक्शन बिटवीन व्हाट? ओरिजिनल पार्टी एंड लेजिस्लेटिव पार्टी. सेकेंड पॉइंट इज, अगर आप डिफेक्ट कर जाते हैं, who is responsible to give you the punishment? It is the speaker or the chairman of the Rajya Sabha, और आपका जो लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर या चेयरमैन जो भी. अगर आप उसी पार्टी के हैं और आपके सपोर्ट में कोई आके खड़ा हो रहा है, आप क्या करते हैं? आप इसी डिफेक्शन वाले जो केसेस है इस पे बैठ जाते हैं. यू डोंट डू एनीथिंग, और ऑटोमेटिकली एक इलेक्शन साइकिल से दूसरा इलेक्शन साइकिल हो जाता है. एक इलेक्शन साइकिल से जब दूसरा इलेक्शन साइकिल हो जाता है तो क्या होता है? आप वैसे ही वैसे आप अपना टेन्योर खत्म कर देते हैं. सो अगर आप एक पार्टी से दूसरे पार्टी की तरफ शिफ्ट भी करते हैं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज द स्पीकर डजंट टेक एनी एक्शन ऑन यू. इफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स, इफ दे गिव अ जजमेंट, और द सुप्रीम कोर्ट गिव्स अ जजमेंट पर से, वेर इन द से कि अगर एक लेजिस्लेटर डिफेक्ट करता है 6 महीने के अंदर, द स्पीकर इज बाउंड टू गिव हिज जजमेंट. 6 months, देयर इज अ टाइम फ्रेम बीइंग जनरेटेड. अगर टाइम फ्रेम जनरेट कर दिया जाता है तो डेफिनेटली इट विल हैव हायर इंपैक्ट ऑन योर डिफेक्शन केसेस. लोग डिफेक्शन करने में डरेंगे. सुप्रीम कोर्ट हैज टू टेक इनटू कंसिडरेशन कि ये ओरिजिनल पार्टी और लेजिस्लेटिव पार्टी में क्या डिफरेंसेस हो सकता है. क्या ओरिजिनल पार्टी को छोड़ के लेजिस्लेटिव पार्टी वाले ज्वाइन कर सकते हैं कहीं पे विदाउट द कॉन्करेंस ऑफ द लीडर्स? तो ये सब चीजें सुप्रीम कोर्ट के पास आज के डेट में है. सुप्रीम कोर्ट ने इस पे जजमेंट नहीं दिया है, जिसका सारा फायदा आज के डेट में सारी पार्टीज कर रहे हैं. वी कैन नॉट ब्लेम वन पार्टी पर से. एवरी पार्टी इज benefiting from these loopholes in your constitution. It was created with a good mindset so as to help the Indian democracy, but the same 10th schedule has been made in a manner so as to make a mockery out of the anti-defection law. कुछ नहीं हो पाया. ना जो 6 लोग शिफ्ट किए हैं आम आदमी पार्टी से, उनका कुछ हुआ,
ना जो बीएसपी से कांग्रेस गए थे उनका कुछ हुआ, ना जो अभी भी शिफ्ट कर रहे हैं उनका कुछ होगा, बिकॉज वी हैव लेफ्ट मल्टीपल थिंग्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन ओपन एंडेड, जिसपे हमने कोई क्लोज काम नहीं किया, जिसको क्लोज करने का काम नहीं किया. Unless and until we close these things down, we will not have the benefits accruing to the people of India in terms of their respect for the Indian democracy. तो ये है प्रॉब्लम. नेक्स्ट क्लास रे आमे आउ दिटा टॉपिक करिबा. One will be with regards to Odisha, the another will be with respect to India. ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच.